Okay, let's start with first chapter, that is creating HTML forms using KompoZer. Okay, so here everyone knows about HTML forms. Okay, now everyone has filled a form. There are two types of form. First is physical form, that is pen and paper method. Second is online form. So here what we are going to learn is about online form, that is how to create HTML form using KompoZer. Okay, the software which we are going to use in this chapter, that is KompoZer. Using KompoZer, we are going to create a form, and the elements of the form, which all elements which we are going to use in form, that are text box, text area, submit button, reset button, radio button, checkbox, select an option. Now select an option, it is also known as selection list. Text box, it is also known as text. So how to use these elements? These all are the elements of form which we have to use while creating the form. Okay, suppose if you want to create a form like student registration, so in that student registration, where text box will be used in entries like name, date of birth, email or age. In such entries, the box which we will use, that is text box. Okay, why text box? There is another box which is text area. It is also same like text box, but the difference between text box and text area is text box, it will accept only some limited characters. Okay, limited characters as well as single line input. It will accept only single line input, whereas text area, what it will do, it will accept multiple lines. Okay, text area, it will accept multiple lines and there is no limitation in characters. Multiple lines and there is no limitation in characters. Okay, so text area we will use for address purpose. Okay, so address, there is multiple line. If you are writing address, you will write multiple lines. Okay, now next is radio button. So where to use radio button? Suppose if there is any options like you have to select either any one option from the list. Either any one option from the list means कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो लिस्ट में से कोई भी एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, so there we will use radio button. Okay, the same way checkbox is also used to select an option. Okay, if we are having an option from in a list in our form, we can use to select, okay, like hobby, subject. Okay, now the difference between radio button and checkbox is checkbox is used to select either any one option from the list. जहाँ पे आपको multiple options दिए गए, उसमें से सिर्फ एक ही option select होगा. Okay, for gender, if there is male, female, other, so if you click on male and afterward if you click on female, so the male part it will get unselected and male will get selected, means only one option will be selected from the list. Whereas in checkbox, what checkbox will do, it is used when you want to select multiple option. Okay, जब आपको multiple options select करने हैं, like subject आपको exam के लिए select करना है, okay, या फिर hobbies है, so for that purpose we will use checkbox. So the difference between this radio button and checkbox is, in radio button you can select either any one option from the list. In checkbox you can select multiple options. Okay, now next is select an option. It is also named as selection list. In software it is known as selection list. So this element is used so to creating a drop down menu. Okay, suppose for example city or state. In form there is two entries like cities or state. So if you click on that box, you will receive a drop down menu, like you will receive an options from a list, and then from that list you have to select any one option. Like city, if there are 5 cities, Vapi, Daman, Valsad, Surat, Navsari. Okay, if you click on that you will receive that list, and from that list you have to select any one option. Okay, so that it is known as selection list or select an option. Any one option will be selected, but there will be a list. Next is submit button. So as the name it is submit button, you can recognize how it will work, right? Submit button means the details what you have filled in a form, it will be submitted to the URL, specified URL. Matlab, like while creating a form we have to specify URL. URL means the path or the location where the details to be stored on the server, particular website or particular file. ठीक है, जब हम फॉर्म डिजाइन करते हैं उस टाइम पे हमको ये URL स्पेसिफाई करना रहता है कि हमको ये जो भी डेटा हम फिलअप करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होगा. नाउ नेक्स्ट इज reset button. As the name reset, it will
when you click on reset button, it will reset all the form, all the entries in the field. Okay, जो भी एलिमेंट्स में आपने जो भी एंट्रीज आपने फिलअप किया वो सब कुछ रिसेट कर देगा, क्लियर कर देगा. ओके, क्लियर इन द सेंस के सिर्फ स्क्रीन से, बट जो सबमिट करके जो डेटा हमने जहां पे सेव किया है, जो भी यूआरएल पे गया है, वो वहीं पे स्टोर रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर क्रिएटिंग अ फॉर्म, सपोज इफ यू हैव क्रिएटेड अ फॉर्म, ओके, द फॉर्म एंट्रीज विल बी नेम, address, age, hobbies, cities, okay, and select submit button and reset button. After filling up the form, suppose in name field, if you haven't put any entries in name field, okay, age, बाकी सारी एंट्री आपने फिलअप कर लिया, but the name field is empty, and then after you submit the form, so what it will do? It will accept every entries, right? If we are creating a form for the first time, it will accept every entry is like, अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, बट अगर हमने नेम फील्ड में एम्प्टी रखा है तो वो सबमिट नहीं होना चाहिए, राइट? एज, इन एज if you are writing alphabets or numbers, or in pin code, okay, if there is one entry like pin code, in pin code we are giving input like only 5 digits, so it should give us a warning message. It should not accept all the entries like alphabets or digit below 6 digit or above 7 digit. It should give us warning message. Okay, अब वो चीज करने के लिए हमको क्या करना होता है? Form validation. Now form validation means what all entries it will accept, the element which we are using, the element which entries, what type of data it will accept, and what type of data it will not accept. Okay, and working of the form, how it will work while submitting, it is known as form validation. And while doing form validation, there are two terms, event and event handler. Okay, so now when you interact with website or a form, suppose you if you are going online and interacting with a website, so how will you interact? Without JavaScript form validation, if we are doing form validation, we are using JavaScript, a block of code which is known as JavaScript. And without JavaScript, our website will be static. Static means you cannot interact with the website. जो कुछ बस वहां पे दिख रहा है, बस हमको देख के वो फिनिश करना है. But now time we want to interact with the website. कुछ हमको हमारे अकॉर्डिंग भी करना है, राइट? कुछ इनपुट देना है या फिर कुछ करना है. So उसके लिए हम क्या करेंगे? We will add interactivity in our website or in our form, and for that we will do form validation, and which is done by using JavaScript. And the language which we are going to use here is JavaScript. While designing the form, we are using HTML. For designing purpose, we are using HTML. But for form validation and working of the form, it is done by a script that is known as JavaScript. Okay, and why we are using KompoZer? Because without KompoZer, if we want to create a form, we have to write a lengthy program that is HTML codes. HTML forms mean it won't be developed using HTML code. It is compulsory to write HTML code. Okay, so to skip that part, almost it is about 1 page, तो उतना कोड हमको लिखना रहेगा. And to skip that part, they have introduced with a software named KompoZer, and that using KompoZer software, we don't have to write any code for the designing part. Okay, we have to just select the element and place it on the form, कि हमको कहाँ पे वो एलिमेंट चाहिए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन लिस्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कहाँ पे चाहिए, बस कर्सर प्लेस करो और ऑप्शंस में जाके सिलेक्ट करो और वो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा. एंड द बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड में जो कोडिंग पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है KompoZer वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टाइप कर देगा फॉर डिजाइनिंग पार्ट. बट वर्किंग ऑफ द फॉर्म वैलिडेशन, उसके लिए हमको स्क्रिप्ट लिखना है, दैट इज जावास्क्रिप्ट. ओके, नाउ जो ब्लॉक ऑफ कोड जो हम यूज करेंगे वो होता है जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे दो टर्म होता है, एक इवेंट और एक इवेंट हैंडलर. सो आफ्टर फिलिंग ऑफ द फॉर्म, जो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया है, नेम, एक फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे एंट्रीज होगी नेम और पिन कोड एंड सबमिट बटन. ओनली 3 एंट्रीज विल बी देयर. फर्स्ट इज नेम, इट विल कंटेन अ बॉक्स दैट इज टेक्स्ट बॉक्स. पिन कोड, again pin code will contain text box. Next is submit button. Okay, so here the condition will be name,
इट शुडंट बी एम्प्टी, नेम वाला जो पार्ट है, जो बॉक्स है, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए जब हम सबमिट करेंगे तभी। ओके, तो अगर एम्प्टी रहा एंड इफ यू क्लिक ऑन सबमिट बटन, इट शुड गिव अस अ वार्निंग मैसेज। ओके, इट शुडंट सबमिट द डिटेल्स टू द यूआरएल, स्पेसिफाइड यूआरएल। सेम वे फॉर द पिन कोड, पिन कोड में भी यहाँ पे आइदर इट शुड बी 6 डिजिट नंबर, ठीक है, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। बट अगर 5 डिजिट नंबर है या 7 डिजिट नंबर है या तो फिर अल्फाबेट लिखा हमने पिन कोड में, अगर अल्फाबेट लिखेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमको एक कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। ओके, सो नाउ दिस पार्ट इज नोन एज जावास्क्रिप्ट एंड हाउ इट वर्क्स and how it returns a value. Okay, that is shown here. Now coming back to JavaScript event and event handler. So what is event? Whenever you click on your web page or a form, okay, कोई भी ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हो तब जाके एक इवेंट अकर होता है। Okay, that is known as interactivity. Okay, and that is done through JavaScript. Now when an event occurs, it is corresponded with a event handler. ठीक है, इवेंट हैंडल करने के लिए जब इवेंट अकर होता है, so it should be correspond with an event handler. Now starting with script, first line है हमारा यहाँ पे script. Now second thing is function. Now event, when an event occur, उसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा होता है इवेंट के लिए, तब वो फंक्शन एक्टिवेट होता है। ओके, with the name of the function. तो द फर्स्ट पार्ट इज फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन एक्टिवेट होता है, कौन सा फंक्शन? वैलिडेट फॉर्म। एंड द वैलिडेट फॉर्म जो हमने लिखा है वो यूजर डिफाइन होता है, कोई भी फंक्शन का नाम आप दे सकते हो व्हाइल डिजाइनिंग अ फॉर्म। ओके, अब नाउ सेकेंड पार्ट इज, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया है। नाउ व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या? इट इज अ कंटेनर विच टेक्स मल्टीपल डेटा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, वो एक वैल्यू होल्ड करता है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल x, सेकेंड एक और वेरिएबल लिया हमने, वेरिएबल y। सो नाउ वेरिएबल x इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम डॉट वैल्यू। नाउ व्हाट इज नेम? वेरिएबल x, इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ नेम। वेरिएबल x को हम किसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दे रहे? नेम। अब नेम को जो भी वैल्यू हम देंगे वो किसकी वैल्यू होगी? वेरिएबल x। अब ये पूरे स्क्रिप्ट में हम नेम की जगह पे क्या यूज करेंगे? x। इन द सेम वे वेरिएबल y, इट इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ पिन कोड। तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स दिए, नेम और पिन कोड। जो x है, वेरिएबल x है, वो नेम की वैल्यू होल्ड कर रहा है। सेकेंडली वेरिएबल y, इट इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ पिन कोड। ओके, सिर्फ दो वेरिएबल हमने असाइन कर दिया है। नाउ next part is if statement. Now if statement is known as conditional statement. यहाँ पे it has a condition. Okay, now how it works? The conditional statement कैसे काम करता है? अगर वो condition, if statement कैसे काम करेगा? Like if the condition is true, then the corresponding statement will be executed, and if the condition is false, it will skip the statement. For example, if ये एक कंडीशन स्टेटमेंट है, इफ x इक्वल्स टू नल और x इक्वल्स टू एम्प्टी। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला जो पार्ट है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। एंड हाउ इट विल वर्क, आई विल शो यू। लाइक नेम, सबमिट बटन। ओके, नाउ हमारे पास जो फॉर्म है, इफ यू आर गिविंग इनपुट, यहाँ पे इफ यू आर राइटिंग अ नेम, ओके, वॉट एवर एंट्रीज वी विल प्रोवाइड, एंड सपोज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड के लिए भी एक बॉक्स है। अगर हम यहाँ पे पिन कोड प्रोवाइड नहीं करते, एंड इफ वी क्लिक ऑन सबमिट बटन, सो व्हाट इट विल डू? अब सबमिट बटन पे क्लिक करने से क्या होता है? एक इवेंट अकर होता है। ठीक है, अब इवेंट अकर करने के लिए एक इवेंट हैंडलर हमने यहाँ पे लिखा है, वो है जावास्क्रिप्ट, वो जो पूरे इवेंट को हैंडल
करेगा। सो फंक्शन जो एक्टिवेट होगा हमारा वैलिडेट फॉर्म। अब वेरिएबल x नेम है, वेरिएबल y पिन कोड है। इफ x इक्वल्स टू नल, यहाँ पे नाम हमने दिया है तो नल नहीं है, तो क्या हो गया ये कंडीशन, पहला कंडीशन फॉल्स। और यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वो इज और x इक्वल्स टू एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस भी नहीं दिया हमने फिलअप किया हुआ, तो ये पार्ट भी फॉल्स हो गया। सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्किप दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा स्किप कर देगा कंपाइलर हमारा, एंड इट विल गो टू द सेकेंड पार्ट दैट इज इफ y इक्वल्स टू एम्प्टी, y इट इज यूज्ड फॉर पिन कोड। अब हमने पिन कोड पे यहाँ पे इज देयर एनी एंट्री इन पिन कोड, वी हैवंट स्पेसिफाइड एनी एंट्री, सो द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। So what it will do, the given part, the statement, ठीक है, कंडीशन दिया है, इफ स्टेटमेंट है, कंडीशन है, तो उसके नीचे उसका एक स्टेटमेंट रहेगा, तो वो एग्जीक्यूट होगा। सो अलर्ट हियर, अलर्ट एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। अलर्ट इज इनबिल्ट फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, इट विल शो यू द मैसेज ऑन योर विंडोज, ठीक है। द स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर अलर्ट इन इन्वर्टेड कॉमास एंड ब्रैकेट, इट विल सेम पॉप अप ऑन योर विंडोज। जो भी मैसेज आपने लिखा वैसा का वैसा मैसेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा जब आप सबमिट करोगे। तो अब मैसेज क्या मिलेगा हमको, प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपर्ली, राइट, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो हमको मैसेज आ गया, प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपर्ली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज document.js1.pincode.focus, so here another method is focus. Why focus method is used? To focus on the particular element. अब यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है हमारा, पिन कोड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट JS1 इज अ फाइल नेम, जो डॉक्यूमेंट कौन सा है JS1, तो फाइल में पिन कोड यहाँ पे फोकस क्या करेगा, जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, हमको वार्निंग मैसेज मिलेगा पिन कोड पे। क्यों, क्योंकि हमने फोकस किसको करवाया, पिन कोड को। इट विल फोकस ऑन पिन कोड, वी विल गेट अ वार्निंग मैसेज, प्लीज एंटर द पिन कोड प्रॉपर्ली, एंड देन अ कर्सर, जो हमारा कर्सर है वो पिन कोड वाले बॉक्स पे ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। सो द फोकस मेथड इज यूज्ड टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर एलिमेंट, जहां पे भी आपकी एरर्स आ रही है तो वहां पे कर्सर और आपका वार्निंग मैसेज वहां पे ही डिस्प्ले होगा। ओके, नाउ देयर आर मल्टीपल कंडीशंस फॉर पिन कोड। तो द फर्स्ट कंडीशन इज इफ y इक्वल्स टू एम्प्टी, second is if nan y. Now nan means if is nan is not a number, okay. So what it will do, not a number, it will check if the given input is not a number, okay. Not a number means अगर हमने अल्फाबेट दिया है, okay. So while giving input as alphabet in pin code, it will get activated or the condition will get true। अगर हमने सारे नंबर्स दिए, नो मैटर 2 नंबर्स 3 नंबर 4 5 6 7 जितने भी नंबर्स आप वहां पे एंट्री करो तो ये ट्रू हो जाएगा, एंड इफ इट इज ट्रू इट वॉन्ट एग्जीक्यूट द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ईच एंड एवरी कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट इफ कंडीशन, इट कम्स विद अ करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट। एक कंडीशन हमने दिया तो उसके नीचे हमने स्टेटमेंट लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, स्किप हो जाएगा, अगर वो फॉल्स होता है तो हमको क्या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना, क्या मैसेज देना है, ओके। तो जितनी भी कंडीशन आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो उसके नीचे हमको स्टेटमेंट स्पेसिफाई करना ही है, ओके। और वो डिपेंड करता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल स्किप द स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन ओनली द करस्पॉन्डिंग पार्ट विल गेट executed, okay. Now first condition is if y, now what is y, pin code is empty. Second condition is if is nan is not a number, क्या है, pin code. Next condition is
if y dot length is greater than 6, if length of the pin code is greater than 6, okay, or y dot length is smaller than 6. now दो कंडीशन हमने सेपरेट लिखा है और यहाँ पे दो कंडीशन साथ में लिखा है. now it is possible we can write all the four condition in a same if condition. okay, सिंगल एक इफ कंडीशन में हम चारों कंडीशन को एक साथ में लिख सकते हैं. बट द थिंग इज वी विल गेट द सिंगल एरर मैसेज. एरर मैसेज मतलब एक सिंगल ही अलर्ट मैसेज हम लिख सकते हैं. सपोज अल्फाबेट लिखा है हमने तो भी वही मैसेज आएगा. लाइक हमने मैसेज लिखा है प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपर्ली, अल्फाबेट लिखने पे भी यही आएगा. ब्लैंक रखा है तो भी सेम मैसेज विल बी डिस्प्लेड. लेंथ लेस देन 6, again it will show the same message please enter the pin code properly. बट हमको हर एक एरर्स के लिए, हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग मैसेज चाहिए. देन व्हाट वी विल डू, वी विल स्पेसिफाई डिफरेंट कंडीशन. ओके, सो हियर वी हैव टेकन थ्री डिफरेंट कंडीशन. फर्स्ट इज इफ y is empty, second is nan. okay, now how if is nan will work. if is nan, again we'll take same example, name, so here in pin code section we have written 1 2 3 and ABC. so will it accept? अगर पिन कोड जहाँ पे सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, we have written alphabet also. okay, it's a combination of both numbers and alphabet, so it shouldn't accept because the condition is if is nan. nan means not a number, then it will get activated. activated means the condition will get true. okay, अभी पिन कोड 1 2 3 ABC. so is nan means not a number, तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? not a number, true, right? so now here the condition is true, so what it will do, it will execute the corresponding statement. so what the statement is, alert. the use of alert function is it will show the message as it is what we have specified. the message is please enter a number. okay, so where it will be displayed, pin code. in pin code section we will get a message. as soon as you click on submit button you will get a message please enter a number, and that too it will be displayed on the pin code element. okay, pin code के बाजू में जो बॉक्स है वही एलिमेंट पे वो मैसेज क्लिक डिस्प्ले होगा. एंड हमारा कर्सर, जो कर्सर है हमारा, वो डायरेक्टली आके प्लेस हो जाएगा पिन कोड पे. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज इफ वी आर राइटिंग 5 digit. ओके, नाउ अगेन फॉर नेम, पिन कोड, if you are specifying 1 2 3 4 5 giving only 5 inputs. okay, so यहाँ पे दो कंडीशन है. if y equals to empty, y जो है हमारा पिन कोड है, y equals to empty, it's not empty, so this condition is false, so this part will be skipped. second condition, if is nan, it's not a number, सब numbers ही है, so again false. तो इसका भी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होगा, स्किप हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ y डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 6, इफ यू आर गिविंग इनपुट ओनली 5 digit, तो ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ग्रेटर देन 6, अगेन इट इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स. और दिस पैरेलल लाइन इंडिकेट्स और y डॉट लेंथ इज स्मॉलर देन 6, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया हमारा, बिकॉज सिर्फ 5 डिजिट हमने इनपुट किया हुआ है. सो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड व्हाट वी विल गेट द मैसेज, प्लीज एंटर 6 digit. ओके, इफ लेंथ इज ग्रेटर देन 6 और लेंथ इज स्मॉलर देन 6,
अगर ग्रेटर रहा तो भी सेम मैसेज मिलेगा हमको, तब ये वाला पार्ट ट्रू होगा। अगर स्मॉल रहा, स्मॉलर देन 6, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों के लिए हमको सेम मैसेज मिलेगा। एंड देन सेकेंड लाइन जो है हमारा document.js1.pincode.focus, अब दिस थिंग इज टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर एलिमेंट। अब किस पे फोकस करेगा ये? पिन कोड। ओके, इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग पिन कोड, ओके, सो एरर मैसेज रेंडमली स्क्रीन पे कहीं पे भी एरर मैसेज आएगा, बट हमारा कर्सर जो पिन कोड वाला सेक्शन है वहां पे कर्सर भी प्लेस नहीं होगा। सो उसके लिए हमने ये फोकस मेथड यूज करते हैं। इट विल डायरेक्टली फोकस ऑन द गिवन एलिमेंट, ओके। एंड देन रिटर्न फॉल्स, this statement is used to return the value. Return statement is used to return the specific value. Okay, if you are not using this return statement in our programming, it will not return any value. Okay, जो error message हमको मिल रहा है वो message हमको display ही नहीं होगा। Instead, for example, अभी यहाँ पे हमने ये कंडीशन दिया था if x, ओके, अगर नेम वाली फील्ड हमने एम्प्टी रखा है, सो क्या करेगा? प्लीज एंटर द नेम प्रॉपर्ली, ये मैसेज हमको मिलेगा। बट रिटर्न फॉल्स, ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, रिटर्न फॉल्स। सो व्हाट इट विल डू? इट वॉन्ट रिटर्न एनी वैल्यू। जब एरर मैसेज हमको आना चाहिए वो मैसेज भी नहीं आएगा। इंस्टेड इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया। यहाँ में हमने रिटर्न फॉल्स किया है, तो इसकी जो वैल्यू आने चाहिए वो हमको मैसेज मिल जाएगा, बट ये वाला मैसेज हमको नहीं मिलेगा। सो रिटर्न स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के बाद हमने लिखा है रिटर्न फॉल्स मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट का काम यही है कि इट विल रिटर्न अ स्पेसिफाइड वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जैसे अलर्ट मैसेज हमने लिखा है, तो अलर्ट पे आते ही वो डायरेक्टली मैसेज डिस्प्ले नहीं करता, रिटर्न पे जाके वो वैल्यू रिटर्न करता है हमको। ओके, नाउ दैट्स इट इन जावास्क्रिप्ट। नाउ द टर्म event and event handler, as I have explained you, did you got it? When you click on web page or any option or any button, an event occur, and to handle that event, okay, we have written an event handler, that is a block of code, that is JavaScript. वो event को handle करने के लिए हमने ये code लिखा है JavaScript. It is also known as event handler, and it contains multiple functions. Event handler जो है multiple functions contain करता है, that is function, okay, function name, return statement, focus, okay, alert. तो ये सब क्या है? एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के। We'll underline it. Now this thing is a function. Now validate form is the name of the function, okay, which is to be specified while creating a form in KompoZer. जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे उसमें हमको ये फंक्शन का नाम स्पेसिफाई करना रहता है, तब जाके ये फंक्शन एक्टिवेट होगा। ओके, नाउ next thing what we have used is variables. We have declared two variables, that is x and y. X is for name and y is for pin code. Now name, suppose name, why we have declared it as a variable? Is it compulsory? Yes, because every time we fill up a form, the value of the name will be different, right? Also with pin code, every student will be from different part, so it is known as variable. The variable means the value of name and pin code will keeps on varying. Varying means it keeps on changing. It is not constant, so we have declared it as a variable. Now a statement, if statement, it is known as conditional statement, and every condition comes with its own statement. Okay, a block of statement which is shown as a message. Okay, so यहाँ पे if condition है तो यहाँ पे एक उसका block of statement है जो कि execute होता है जब condition true होती है. Okay, and if it is false, it will skip the block of statement, it will go to the next condition. The next condition is, again it is if condition, but here
there is one more inbuilt function, that is alert. Alert function, it is used to display a message which is written within the brackets and double inverted commas. Okay, now here one more thing, focus method. Now focus, it is a method used to focus on a particular element. Okay, और दूसरा यहाँ पे क्या है, रिटर्न. रिटर्न स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू रिटर्न अ स्पेसिफिक वैल्यू. जो भी वैल्यू हमको रिटर्न करना है, अगर कंडीशन फॉल्स ट्रू हुआ तो एक वैल्यू वो रिटर्न करेगा उसका आउटपुट. तो वो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट. ओके,